करेंगे. Come on. Aparna, my absolute most familiar person on this panel, but I have to ask you this. I am most excited about this collaboration because as much as I am a fan of Kangana Ranaut, I am a huge fan of Prime Video. So this marriage, जैसे मैंने कहा आप जोड़ियां मिलाती हैं, ये जो marriage है between Prime Video, Kangana Ranaut and Manikarnika Films, can you tell me how that came about? This is truly a very special collaboration. We've just seen the trailer. It's absolutely heartwarming. And as Kangana was saying right at the beginning, that when she sent the script, it is so rooted. It is so different from anything that we had read, and it is so authentic and honest that it really touched us. And the fact that she is an incredible actor, a phenomenal hands-on producer. She was there in every meeting. She's so detail-oriented. And once she sets her mind to something, she just makes it happen. The music. Look at this incredible casting. I mean, powerhouse, Nawaz Bhai in this film. And this little dhamaka that we managed to get. And the way she has nurtured this project. It's been amazing, and it's really been a very, very rewarding journey for us. I love it. I love it that there are two women here who made this happen, honestly. Okay, so congratulations to both of you. Kangana, finally, I get to ask you a question. There seems to be a sort of innocence and a fresh take. Tiku plays a struggling actor, Sheru plays a junior artist, but I feel that there's something here which is deeper. What inspired you? Because mere hisab se this is a story of struggles, of dreams, and of passion. See, first of all, honestly, where this film started, as it started with Kabir sir, Irfan Saab and me. So we've all, and Nawaz sir, of course, we've all gone through that grind of struggling days. And today we have everything, maybe stardom and fans, and the world is very kind to us. But we've seen that side of Mumbai or Bollywood and that underbelly of Bollywood that we call, shady audition offices, or those offers, or the things that you come to do and you end up doing, you just kind of drift into different things, but still that Bollywood dream continues, and yet it manages to nurtures and take care of so many people. It's a heartfelt ode, a kind of love letter to those who come to the city. Somewhere they lose their dreams, but they yet end up finding something much more meaningful, It's just that thought. And me as a producer, I'm anyway a very busy actor, so whatever I do, it's not just to occupy myself. It has a larger meaning to it, like for me, I think the most important thing in this project for me was to delve into the people who we see behind actors, behind the stars, and as our own journeys, because maybe as much we talk about the struggles that we faced as coming up in this line, but a piece of art, a creative interpretation of that struggle I think will kind of strike that chord with audiences. That's why I indulged in this project, and also working with Nawaz Saab so many years, never got an opportunity, and finding fresh talent like Avni. The way I was also found by somebody, giving an opening to outsiders to come into films. These are far more important for me, and again finding amazing people outside of that regular film setup that we make, like Prime Video, where these incredibly talented people internationally and like kind of working on world platform and finding rooted stories in our country, in our culture, finding talent and giving them this international platform to showcase their talent. This is such a great time to be in the films, and I'm glad that I lasted this long. Oh my God. Don't say lasted, Kangana. Don't say lasted. I mean, it's been 17 years since I've been working as an actor. It's wonderful. Absolutely, absolutely. Can we please give a round of applause for that? Amazing. Because you could have chosen to tell any story. Honestly, after 17 years in a position of privilege, you could have said any story. But you chose this story, and you chose to tell it this way. So I think it definitely deserves a congratulations from our heart. For right now, of course, thank you so much for speaking with me. मेरे सवालों के जवाब आपने इतने
खूबसूरत तरीके से दिया, लेकिन as always it's about my friends in the media. They're here to ask you questions, and as always they've sent us some of their questions, and we'd like to of course address them in order. So सबसे पहले, can I please welcome Vinamra? Vinamra, are you here? Hi Vinamra, how are you doing? He's from First Post. Do me a favor, please address your question to the person you'd like to ask it to. So I had a question for Avneet. What drew you to the character of Tiku, and how was the prep like for you? द प्रेप या हम लोगों ने बहुत सारे स्क्रिप्ट रीडिंग्स किए, वर्कशॉप्स किए एंड विद सर एंड मैम एंड आई हैड गेन अ लिटिल बिट ऑफ वेट दैट टाइम एंड बहुत सारे मूवीज देखे मैंने एज मैम सेड, और आई थिंक मेन तो ये था कि मैंने मैम के साथ जो रिहर्स किए थे सीन्स, व्हाट आई हैड रिहर्स्ड विद हर. She really made me feel very comfortable on set because obviously I was very nervous. But rehearsing with her, getting her acting skills, because I've been like watching her like since a very long time, and I've loved her. I love her acting, how effortless she is. So I think ma'am has really helped me, and Navasa also made me really comfortable on set because I was very nervous during the shoot. So yeah. Love it. Thank you, Vinamra, for your question. We're going to move on to Sonali from TV9. Sonali, are you here? Hi, the mic is coming to you, don't worry. मेरा सवाल नवाज सर से हेलो सर. सर ट्रेलर में हमने शेरू को देखा, तो उसने जिस तरह से इंडस्ट्री में स्ट्रगल दिखाया है, उस तरह से आपने भी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपने भी सेकेंडरी किरदार भी किए हैं. तो क्या आपके उस एक्सपीरियंस का जो रेफरेंस है वो आपके किरदार में आपने यूज़ किया है? बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि उस दौरान सेकेंडरी क्या मतलब बहुत छोटे छोटे रोल भी किए थे मैंने. एक अभी मैं जब मेकअप करा रहा था तो उस दौरान मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे जूनियर आर्टिस्टों से एक मैं भी था, तो उनका मेकअप होना था. तो आई एम सॉरी, मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया, मैं लाइन से खड़ा किया, 10-12 थे हम लोग, और हाथ में पाउडर लिया और सब पे हो गया मेकअप, जाओ. तो इस तरह की अभी अचानक से याद आया था मुझे इंसिडेंट. तो बाकी बहुत सारे ऐसे थे जिन जिन लोगों के साथ मैं स्ट्रगल करता था, वो मैंने फिल्म में भी देखे. एक मिस फिल्म की थी मैंने, तो उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त थे पुराने. अच्छा, उनको पता नहीं था मैं लीड कर रहा था उसमें मिस लवली में. तो बोले, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने, हेलो मैं लीड कर रहा हूँ, किसी को बताने मत, मैं तुम्हारे साथ काम करता था. बहुत सारे इंसिडेंट होते. Thank you for your question. हमने भी एक फिल्म की थी अपर्णा, और हमने एक फिल्म की थी बहुत पहले, आई थिंक 2002 के आसपास की बात है. बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया उन किस्सों के लिए. सांची हमारे साथ है एब्सोल्यूट इंडिया से. सांची जी, आप तक माइक पहुंच चुका होगा. यस. शची from Absolute India. Sachi, I'm so Yeah. sorry, I misread your name. Apologies. My question is from Kangana ma'am. Ma'am, what made you choose this film and back this film? What was the inspiration behind? Sachi, like I said, we were to do this film. It was called Divine Lovers back then when this was launched. And Irfan Saab and I and Kabir together we worked on this. And this was, like I said, we'd come from outside and we'd all seen these kind of struggles. But somehow only an achiever's film makes it to the celluloid, Like we know this person had struggled, and then that they, like I'd done a Wolam Hai, or say like a dirty picture, or always like somebody who's made it. But there are lakhs and lakhs of people who are coming to Mumbai every day with a dream. Where do these people go? What happens to them? Because some of them run away from their homes, like like the kind of situation I was in. I had shut all my doors behind me, so there was no going back for me. So what happens to people like this? And this thought often, this was just one incident, that just happened in my life. That one day, one audition, every day I used to get rejected in auditions. Every day people just rejected me. And one selection just changed my life, which Anurag Basu had approved of me and all that. Had that not happened, what would my life be? Where would I end up?
this always kind of, played in my mind over and over and over again. That doesn't make me less talented. That I always say that the examination happens one day, and but rest of the day you could be a great student, but then that one day it doesn't go well, but that's your result of your life. So these kind of thoughts, that what happens to these people and what would my life be, made me very this made this project feel very personal to me. Easy to say that I could have made anything, but what else I could have made? If you go to think about it, I was driven by a passion from the age of 15. I have not written love letters like other girls, or I've not indulged in any. I was already on the set. I was already pursuing a career at my teen age, when people are mostly, So what kind of a film would I make? And then life was full of struggles, mostly struggles, and then few successes. This is the only film I could make. There is no other story that I can tell, because I don't know anything else. Beautifully said. Thank you so much for your answer, Sachi, for your question, Sachi. And moving on, I do hope I get the next name right. It's simple. It's Neetu. Neetu, are you with us? And is the mic with you? Namaskar. दैनिक भास्कर से हैं आप? हाँ जी, बोलिए. मेरा क्वेश्चन अपर्णा जी के लिए है. मैम यहाँ Amazon प्राइम एक से एक यूनिक आइडियाज लेकर आ रहा है, जैसे फर्जी हुई, जुबली काफ़ी हिट हुई, हैप्पी फैमिली हमने देखा, दहाड़ अभी रिसेंटली काफ़ी हिट हुई है. तो दर्शक टीकू वेड्स शेरू से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, और वो क्या नया फ्लेवर आपकी तरफ से होगा दर्शकों के लिए Amazon प्राइम के? That's a great question, Neetu. हमारा एक ही मिशन है प्राइम वीडियो में, ऐसी कहानियाँ कहें जो अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, हम लोगों की कहानियाँ हैं, जो हमारी तकलीफ़ें, हमारी दिक्कतें, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे सपनों की बातें करती है. And as Kangana was saying, Tiku Weds Sheru is a story of these two people who come from outside with starry eyes, wanting to become a part of this magical world that gives employment to so many people, and brings so many people every day into the city. Some dreams get fulfilled and some don't. I think this film is our little ode. It's a love letter to all those unfulfilled dreams. And I think this film celebrates the spirit of resilience, the spirit of not giving up hope. दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपका जो सपना है वो पूरा होगा. शायद सपने भी बदल जाएंगे इस जर्नी में, लेकिन पूरे होंगे. Thank you so much, Aparna, for your answer. Up next, Tanmay, I hope a mic is with you, and you are from Peeping Moon. Yeah, I'm here. Hi, Tanmay. Kanda ma'am, this is for you. I'm here. Right. Hi. Hi ma'am. So we heard you were the one who found Avneet for the role of Tiku. So can you tell us the anecdote behind this? So the anecdote behind this is that, to begin with, my biggest hesitation was that who will play this role? Because this is such a challenging role. For newcomer का तो कभी सोचा ही नहीं था. But in terms of actresses, we were trying to think who can do this kind of a role. And honestly, I needed a very strong actor. क्योंकि ये मेरा ही रोल था, और मुझे भी कबीर ने ऐसा लिख के दिया था आफ्टर रिवॉल्वर रानी कि मतलब मेरे से भी ऊपर का लिख के दिया था, बहुत डिफिकल्ट रोल लिख के दिया था. एंड फिर मैंने सोचा कि आई शुड, क्योंकि गैंगस्टर में मैंने भी एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर परफॉर्मेंस की है, तो आई डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू गर्ल. और उसमें हम हताश हो गए पूरी तरह से, क्योंकि मुझे वो एक्टिंग कैलिबर मिला ही नहीं किसी में. एंड स्पेशली एक वो जो स्मॉल टाउन गर्ल की जो इनोसेंस होती है, वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी. फिर मैंने मुकेश हावड़ा को भी कहा, मैंने कहा हम लोग ना ऑफिस हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, या हरियाणा में पूरी हंट करते हैं. So we were about to do that, and a friend of mine, Ajay Dhama, he sent me her Insta link, and the minute I saw her, I just had this feeling. I hadn't yet auditioned her, but I got this feeling that this girl can do it, because she was absolutely raw, and also unassuming and very free. So I met her, and I just did some exercises with her, and I figured that she'll be able to do it. And I was taken aback by her spontaneity and her understanding of human emotions.
which are, you know, like layered and really deep, and especially her character, more than Sheru's character, goes through so many trials and so many layers as a woman. But she, being so young at this age, she had the emotional stamina to touch those notes, to dive into those depths, you know, to have that. And I always thought of her as this young chirpy girl, and I thought maybe in emotional scenes I'll have to work very hard with her. But I was so shocked to see, you know, her emotional potency. And honestly, that is what I mean, that when you get a hunch, you know. And I was so right about her, and I'm glad that she's getting this amazing break, because after this you will never get a weak role. Like after Gangster, I got more and more and more difficult roles in my life. So that will happen to you also now. Thank you for that lovely question. Yes. One more question for Avneet. Hi. This is your debut film, and when you went on the sets, how did the day look like? And which was the most challenging scene which made you push your boundaries? मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि आप मूवी देखें पहले. I really want you to watch the film first, and then maybe you will be able to understand better. But all of the scenes, I think, they were very challenging, and we've done a lot of. There are a lot of layers, as ma'am said, to the character, and but I had a fun time. I was very comfortable on set, and I felt really comfortable around Navasa and ma'am. So I just really want you guys to watch Tiku Weds Sheru first, and then. That is on the 23rd. Yes, thank you so much for that. Let's go over to Neeraj. Hi Neeraj, you're from ANN. नीरज साहब को माइक पहुंच चुका. नमस्कार. थैंक यू. हाय कंगना जी, 17 साल एक्टिंग का काम करने के लिए आपकी सक्सेसफुल जर्नी के बाद ये प्रोड्यूसर का जो चुनाव आपने पहना, आपने खुद बताया एक्टर चेज करना कितना मुश्किल है, बैंगलोर जाना पड़ा. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपका नवाज सर के साथ काम करने के बाद का अब क्या अनुभव है? हेलो नीरज, आप हम लोग एक दूसरे को ऑलमोस्ट उतने सालों से जानते हैं जितने सालों से अब मैं काम कर रही हूँ. बट नवाज साहब, ऑब्वियसली मैं उनको एज एन एक्टर हमेशा से जानती थी, लेकिन अब तो हम लोग वी आर लाइक, मुझे तो ऐसा लगता है दोस्ती हो गई है. ऐसा नहीं हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं रोज़, या मैं इनको बताती हूँ कि क्या गप्पे लड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं. लेकिन जब भी इनसे मिलते हैं तो एक बहुत ही एक कंफर्ट इनकी कंपनी में होता है. और मुझे तो जब भी ये मुझे देखते हैं कि इनको जोक्स याद आते हैं, और मुझे तो हंसा हंसा के ये रुला देते हैं, क्योंकि हमारी सेट पे कभी ऐसा कुछ गंभीर भी सीन हो तो मैं सोचती थी कि अब मैं नवाज साहब के साथ नहीं बैठूंगी, क्योंकि ये मुझे हंसाएंगे, फिर मैं डिसओरिएंट हो जाऊंगी. तो बहुत मज़ा आता है. और सबसे इनसे नवाज साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ हाउ ही इज़ विद हिज क्राफ्ट, हाउ ही इज़ विद हिज कैरेक्टर्स. तो ऑब्वियसली वी हैव दिस ग्रेट कोलैबोरेशन, एंड आई होप जल्दी हम लोग साथ में काम करें, पर्दे पे साथ में दिखें. बिल्कुल. Thank you so much Neeraj साहब. And I move over to Naveen from News 24. हाय कंगना, हाय अवनीत, नवाज साहब, अपर्णा मैम, हाय. ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग है. अवनीत, आपको वहाँ पे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा सवाल नवाज सर से है. आप जो भी किरदार आप निभाते हैं उसमें बहुत ही यूनिक आप कुछ ऐसा डालते हैं जो हम लोगों को बहुत ही पसंद आता है. शेरू के किरदार में आप ऐसा क्या यूनिक दिखाने वाले हैं और क्या ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है? आई थिंक जैसे राइटिंग में भी है उसके के एक कॉर्कीनेस है कैरेक्टर में, तो वो मुझे जनरली भी बहुत पसंद आती है. वैसे लाइफ में भी बहुत पसंद आती है कॉर्कीनेस, और वो कैरेक्टर एटीट्यूड है उसका अपना. भले ही वो यहाँ जूनियर आर्टिस्ट है, लेकिन उसका जो दिमाग है या उसका एटीट्यूड है वो जूनियर नहीं, वो बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी बात है, और उस पर बिलीव भी करता है वो. बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. जब मैं अपने घर पे जाता था अपने गांव जाता हूँ, तो जब शुरू में जाता था तो बोलते हाँ भाई क्या चल क्या रहा है बॉम्बे में, क्या हो रहा है तुम्हारा? बोले हो रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है सब चीज़ें. तो फिर अगली बार जब जाता था, हाँ वो कुछ तुम जो बोल के गए थे कुछ तो हुआ नहीं. तो बीच में ऐसा भी टाइम आ गया था, मैं 5-5 साल नहीं जाता था. मैं क्या जवाब दूंगा उनको मैं. लेकिन वो जब बैठते थे हमारे पास, गांव के लोग बैठते थे, वो पूछते थे भाई ये इन लोगों का बताओ, ये सचमुच में किसिंग होती है? सचमुच में होती है? मैं हाँ सब सचमुच में होता है, ऐसे थोड़ा ही ना.
तो बहुत सारी फिल्मों के बारे में जो उनके ख्यालात है ना, तो वो पूछते थे कि फिल्मों में ये सब होता है तो ये वाकई होता है क्या? हमने सुना कि हेमा मालिनी चिलम में जो हुक्का पीती है वो 500 का नोट डाल के पीती है। मैं जब अपने गांव पहली बार गई थी गैंगस्टर के बाद, तो मुझे सारे रिश्तेदार देखने आए, तो कहते कहाँ है छोटू, कहाँ है। फिर मैं आई, मैंने कहा नमस्ते मामा जी, अरे हटो, अरे कहाँ है। मैंने कहा मामा जी मैं ही तो हूँ। तो कहते अरे तू तो वैसी है, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा तो मुझे क्या होना था? कहता हमने सोचा तू बन गई होगी अब एक्ट्रेस। तो मैंने कहा अच्छा। कहते वो मेरी मम्मी को गुड्डी बोलते हैं। कहते गुड्डी ये तो तेरी बेटी वैसी है, इसको बना दिया उन्होंने एक्टर। मैंने कहा और दूसरा मेरे से प्रश्न पूछते थे सब, अगर सब इकट्ठे होंगे तो सबसे पहले अच्छा दिखाना अमिताभ बच्चन के साथ फोटो है तुम्हारा। मैंने कहा मैं अच्छा मिली हो तू? मैंने फिर आई हैड गॉन टू अवार्ड फंक्शन ना, मेरे नए पहले साल में मेरा अवार्ड फंक्शन था। तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा है उनको। फोटो नहीं है तुम्हें, तुझे फोटो लेनी चाहिए थी। तो ये हमारे साथ आपको छोटे गांव के लोगों के साथ में ये बहुत होता है। मुझे भी शुरू में बहुत दिक्कत आती थी। Well, thank you. नवाज साहब, हाँ, तो यही कैरेक्टर इसका भी यही है, शेरू यही है एक्चुअली। शेरू जब भोपाल जाता है, अपने वहाँ पे जाता है, घर जाकर पूछते हैं इससे भाई क्या हो रहा है, क्या होगा, बहुत बड़ा हो रहा है, होने वाला है, इस तरह की चीजें। तो बहुत सिमिलरिटीज हैं कैरेक्टर में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. What a great question. We got some really great stories, and I want to thank each and every one of you for bringing such a wonderful and relevant and meaningful film to our lives. Thank you so much for your precious time, and we can't wait for Tiku Weds Sheru. चलिए अब I'm going to ask you to kindly, leave your seats. Our friends, of course, from the press would like some photos. Thank you so much, my friends from the media who asked us such wonderful questions. And we'll take the chairs away. Thank you. Don't forget, my friends, on the 23rd of June, Tiku Weds Sheru, only on Prime Video.